Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 1, characteristics and life processes of organisms. Today I will deliver its 14th lecture, and the lecture is about physical characteristics. We are already studying about that. In the previous lecture we discussed about teeth. Today we will discuss about bones and lungs of animals. So my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer. This is an alligator and this is a fish. These are human teeth. Quickly tell me that what is the difference of teeth of frog and alligator. Frog has two types of teeth, vomerine and maxillary. Alligator has conical teeth. What is the difference of teeth of fishes and birds? Birds do not have any teeth, they have ridges, whereas fish have very small teeth for tearing the flesh. Then what are the varieties in human teeth and how they facilitate? They have variety of teeth, conical, flat and pointed, and they help in tearing, grinding and chewing the food. So now is the time for an activity. So look at the pictures very carefully and then answer. So quickly tell me which type of skeleton vertebrates have. So this is a vertebrate and here you can see its skeleton. It is inside the body, and quickly remember, when the skeleton is inside the body, what is it called? Endoskeleton it is. What is it? Endoskeleton. So vertebrates have endoskeleton. Next is, look at the frog very carefully, and for what purpose lungs are used. These are the lungs of this frog. So ये इसकी body में क्यों present है? They help in breathing. They help in breathing. So our lungs help us in breathing. So my dear students, in today's lecture, the students will be able to identify major parts, organs in animals. Today we will discuss about bones and lungs and relate the parts and organs of the body of the animals to their function. So today we will discuss that bones support the body and lungs take in air. So these two functions of these two body parts. Okay, my dear students, now let's quickly look at the Islamic perspective. So we made lump bones and we covered the bones with flesh. Then we developed him into an other creation. So blessed is Allah, the best of creators. So my dear students, Allah Taala ने जो है वो एक गोश्त के टुकड़े से इंसान को बनाया और उसके बाद उसके अंदर हड्डियाँ बनाई, हड्डियों के ऊपर गोश्त और खाल बनाई. सो इस तरीके से अल्लाह ताला जो है उसने तख्लीक की है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी. सो अल्लाह ताला जो है वो एक ही इज़ अ ग्रेट क्रिएटर. हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि इनमें हमारे लिए निशानियाँ हैं. Okay, my dear students, now is the time for pre-reading question. Quickly listen to the questions very carefully and then answer. Do all vertebrates have same lungs? No, the lungs are different in different types of vertebrates. Lungs होते सब vertebrates में for breathing, but they are of different types, different तरह के होते हैं वो. Okay, my dear students, now the parts of animals we have already discussed about teeth. Today we are going to discuss about bones and lungs. Other parts of the animals are heart, stomach, muscles and brain. So my dear students, now is the time for reading. I request you all to please open page number 17 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page, so let's start the reading. Put your fingers where I will read. Bones. All vertebrates have an internal network of bones. It is called skeleton. It shapes up and provides framework for the attachment of muscles. You can identify organisms by observing their skeletons. So my dear students, जो हमारा बोन नेटवर्क है बॉडी के अंदर, इसको स्केलेटन कहा जाता है. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर, और ये एक पूरे फ्रेमवर्क की तरह होती है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह का स्केलेटन होता है और हम उस स्केलेटन को देख के बता सकते हैं ये कैसा एनिमल है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम फॉर लंग्स. लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग. ये सांस लेने का ऑर्गन है. मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट ग्रुप्स पोजेसेस लंग्स. तकरीबन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके सब ग्रुप्स के अंदर लंग्स होते हैं. लंग्स टेक इन एयर, दैट इज ऑक्सीजन, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द माउथ और नोज. सो लंग्स का काम क्या होता है कि ये हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. तो गैस एक्सचेंज के लिए माउथ और नोज का इस्तेमाल किया जाता है. लंग्स ट्रांसफर इनहेल ऑक्सीजन टू द ब्लड. सो जो लंग्स के पास ऑक्सीजन आती है जो इन्होंने सांस के साथ अंदर ली होती है वो ब्लड को दे दी जाती है. लंग्स इन लिजर्ड्स हैव लार्जर एयर स्पेसेस facilitating gaseous exchange in a
ड्राई लैंड एनवायरनमेंट. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिजर्ड्स और इनके कैसे लंग्स होते हैं. इनके लंग्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस होती हैं ताकि ये अगर खुश्क जगह पर भी रहें तो वहाँ ये आराम से जो है सांस ले सकें. अब हम hen के लंग्स की बारे में बात करते हैं. द लंग्स ऑफ अ hen बर्ड या परिंदों के आर मल्टी लोब्ड, फैसिलिटेट ब्रीदिंग ड्यूरिंग फ्लाइट. सो जो बर्ड्स होते हैं इनके लंग्स जो हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर 2 लोब्स होती हैं. वो कौन कौन सी होती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. Humans have well developed paired of lungs. These lungs are divided into 2 tiny air sacs of efficient gases exchange. So my dear students, जो humans हैं इनके अंदर 2 lungs होते हैं, one on right and then other on left side, और वेल डेवलप्ड होते हैं. इनके अंदर टाइनी एयर स्पेसेस होती हैं जो कि गैस एक्सचेंज को बहुत ईजी बना देती हैं और एफिशिएंट बना देती हैं. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्किन. अब मछलियां जो होती हैं दे आर ऑल्सो वर्टिब्रेट्स, बट इनके अंदर लंग्स नहीं होते. फॉर ब्रीदिंग पर्पज दे हैव गिल्स, या ये अपनी स्किन से भी ब्रीद इन करती हैं. सो दीज आर द गिल्स ऑफ द फिश. ये इसके गिल्स हैं जहां से ये ब्रीद करती है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बोन्स. सो इंटरनल जो नेटवर्क होता है ये बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, इसको स्केलेटन कहा जाता है. और आप देखें कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट तरह के स्केलेटन्स हैं, और ये तमाम जो है ये एक फ्रेमवर्क है. और ये तमाम एनिमल्स को इनका काम क्या होता है, ये उनको सपोर्ट करते हैं. मसल की अटैचमेंट जो है वो इनके ऊपर होती है, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. ओके, लंग्स. सो द ब्रीदिंग ऑर्गन होता है उसको लंग्स कहा जाता है, और ये सांस लेने में मदद करता है. सो लंग्स जो है ये सैक लाइक होते हैं, और डिफरेंट एनिमल्स में ये जो है थोड़े थोड़े से वेरिएशन होती है इनके अंदर. सो ये फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स के अंदर ये लंग्स हैं. लिजर्ड्स के अंदर लार्जर एयर स्पेसेस होती हैं लंग्स की, ताकि ये ड्राई लैंड में इजीली ब्रीथ कर सकें. देन द बर्ड्स हैव लोब्ड, मल्टी लोब्ड इनके जो है वो होते हैं लंग्स होते हैं, ताकि ये हवा में जब ये उड़ रही होते हैं बर्ड्स तो ये इजीली ब्रीथ कर सकें. Then comes the humans. Humans have well developed lungs. These are the 2 pair of lungs, one on right and one on left side. और इनके अंदर टाइनी एयर स्पेसेस होती हैं, सैक्स होते हैं, ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं ये, ताकि ये एयर को बहुत एफिशिएंट बना सकें, ब्रीदिंग को एफिशिएंट बना सकें. So my dear students, now is the time for evaluation. Quickly listen to the question and then answer. What is the function of bones? It provides support and framework to the body. Then what is the function of lungs? They are the breathing organ and they help in the gas exchange. What is the difference in lungs of lizards and birds? Lizards have lungs with larger air spaces, whereas birds have multi-lobed lungs. Now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. So write down your name and your roll number. Then what type of skeleton vertebrates have? Internal skeleton, which is called endoskeleton. What is the function of bones? They provide support to the body. What is the function of lungs? They help in breathing. What is the difference between lungs of lizard and birds? They have larger air spaces and they have multi-lobed lungs. How lungs facilitate to birds? They have multi-lobed lungs which help them in breathing when they are flying. How is the structure of lungs in humans? Humans have well-developed pair of lungs, and they have tiny air sacs which help in efficient breathing. Okay, my dear students, now is the time for homework. For homework, you will do question number 5 from section C. Okay, my dear students, so this was your homework. Now is the time for wrap up. So today we have learned that all vertebrates have internal network of bones which shape up and provide framework for attachment of muscles. Lungs are breathing organs. Lizards have lungs with larger air spaces. Birds have multi-lobed lungs, help in breathing and during flight. Humans have pair of lungs with tiny air sacs. So my dear students, now you know about other physical characters of vertebrates like bones and lungs. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.